Good morning, friends. Let's have a quick recap of bond market. I'm going to focus typically from exam point of view. So ये fast forward session रहेगा. Basics of the bond, you know, coupon rate, maturity date, call option, put option रहता है, credit rating रहता है. Important चीज ये है कि call date रहता है. There are certain bonds which are callable bonds where company can buy back the bond before maturity. The date on which they can buy back was called the call date. The price at which they buy back is called as a call price. When you evaluate the bonds as an analyst, you have to look at certain ratios for that company. Debt equity ratio क्या है, interest coverage ratio क्या है, debt service coverage ratio क्या है. These ratios we are done in the basics of FM intermediate, not as such. So debt equity ratio tells you debt as a proportion of equity. Interest coverage ratio tells you your operating profit as a percentage of or as a proportion of interest expenditure, and coverage ratio talks about interest plus principal. Intermediate के ratios है. Now bond का जब valuation करना है तो सबसे important आता है required rate of return और a discount rate. YTM जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं बॉन्ड के केस में वो एक्चुअल यील्ड है, लेकिन रिक्वायर्ड रेट कितना होना चाहिए? दैट रिक्वायर्ड रेट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड, टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम और क्रेडिट स्प्रेड. तो एक बार आपको ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया तो आप बॉन्ड की फेयर प्राइस निकाल सकते हो और डिसीजन ले सकते हो इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. तो आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, कैलकुलेट द फेयर प्राइस यूजिंग रिक्वायर्ड रेट, और फिर कंपेयर फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड विथ व्हाट? करंट प्राइस. ये एक तरीका है रुपीज का कंपैरिजन करना है. दूसरा तरीका क्या है? कैलकुलेट यील्ड गिवन बाय बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू करंट मार्केट प्राइस विच इज अ YTM ऑफ अ बॉन्ड, और उस YTM को आप रिक्वायर्ड रेट से कंपेयर करो. डिसीजन जब आपको क्वेश्चन में पूछा है तो बॉन्ड का वैल्यू आता कैसे है? वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, which is going to be equal to YTM in majority of the cases, right? So you need to consider discount rate. और ये जो प्राइस आएगी ये आएगी, value of the bond can be either X interest price called as a clean price or can be a कम interest price, dirty price, including accrued interest. तो उसको क्या बोलते हैं हम? dirty price. एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें याद रखना, जैसे ऑड डेट को वैल्यूएशन पूछते हैं, like coupon payment date are 30 June, 31st December. Examiner asks you valuation on 1st September. What should you do? On your calculator, you can't calculate the answer exactly. So what you do is you calculate the price of the bond on 31st December, X interest price of the bond on 31st December, X interest, add to that interest of that 6 months period, और वो कम इंटरेस्ट प्राइस निकालो 31st December का. 31st December का कम इंटरेस्ट प्राइस आया, उसको डिस्काउंटिंग करो और क्या करो आप? 1st September को कैलकुलेट करो, तो आपको आ जाएगा 1st September का कम इंटरेस्ट प्राइस. वी हैव डन वन क्वेश्चन ऑन दिस, रेफर टू दैट क्वेश्चन. फ्रॉम दैट यू डिडक्ट अक्रूड इंटरेस्ट टू अराइव एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस. अक्रूड इंटरेस्ट विल बी ऑफ जुलाई अगस्त, 2 महीने का. सो यू कैन प्रिपेयर द DCF टेबल विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये मैंने यहां पे लिखा है. इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू बॉन्ड वैल्यूएशन बिटवीन 2 कूपन डेट्स, फॉर एग्जांपल 30 जून 31 दिसंबर है और ट्रांजैक्शन 31 अगस्त को हुआ 1 सितंबर को, तो आपको क्या करना है? आपके जो कैलकुलेटर है उसके हिसाब से फाइंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड डेट, दैट इज 31 दिसंबर, एड इंटरेस्ट ऑफ 1 पीरियड, डिस्काउंट दिस एट YTM और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू गेट ऑन 31 अगस्त, और उसमें से डिडक्ट इंटरेस्ट. दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर. अब YTM क्या है? YTM is the actual yield given by the bond with reference to current market price. उसको आपको कंपेयर करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ. अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न YTM से ज्यादा है, आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं करोगे. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न YTM से कम है तो ही आप जाके इन्वेस्ट करोगे. YTM इज बेसिकली IRR. तो कैलकुलेट करने के लिए आपको IRR है. सो व्हाट फैक्टर्स यू नीड फॉर कैलकुलेटिंग YTM? यू नीड periodic interest amount which is going to be on face value. You need balance time to maturity. You need redemption value which can be at par or premium. You need frequency of coupon payment.
अगर कूपन पेमेंट हाफ ईयरली है तो आपको जो YTM का नंबर आएगा वो हाफ ईयरली रहेगा. YTM आपका आ गया, लेट अस अज्यूम 6%. सो इट इज 6% पर हाफ ईयर, which is 12% per annum compounded half yearly. So effectively 12 से आगे रहेगा per annum rate. करंट प्राइस भी चाहिए रहता है YTM निकालने के लिए. सो इट्स IRR अप्रोच. ये फॉर्मूला जो है वो छोड़ देना. अप्रोक्सीमेट YTM आपका आता है. अप्रोक्सीमेट YTM पहले कैलकुलेट करो ये फॉर्मूला देख के. तो अप्रोक्सीमेट YTM इज इंटरेस्ट पर एनम प्लस कैपिटल गेन पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, विच इज RV plus NP upon 2. And then you make a table, DCF table. अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ईयर 0 इनिशियल प्राइस आउटफ्लो करके दिखेगा, फ्यूचर कैश फ्लोज इनफ्लो करके दिखेंगे. देन यू डू डिस्काउंटिंग and you calculate such a rate at which NPV is 0. YTM is always before tax, क्योंकि हर इन्वेस्टर का टैक्स रेट अलग अलग रहेगा. तो इफ एग्जामिनर आस्क्स यू YTM पोस्ट टैक्स, please remember interest is taxable at a normal rate under income from other sources. Capital gain is taxable at a special rate. So post tax YTM cannot be logically calculated as a pre-tax YTM into 1 minus T. ये ऐसा करना गलत है. तो क्या करना चाहिए? अगर पोस्ट टैक्स YTM कैलकुलेट करना है, फर्स्ट लाइन पढ़ो ऊपर क्या लिखा है. वी नीड टू कन्वर्ट द कैश फ्लो फ्रॉम प्री टैक्स कैश फ्लो टू पोस्ट टैक्स कैश फ्लो, क्योंकि टैक्स रेट सेम नहीं है. तो इंटू 1 माइनस टी मत करना. ये ऐसा क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेंगे तो एडिशनल पॉइंट्स ऑन YTM. So YTM can be worked out by taking X interest price and the future cash flows excluding interest, or you can take a come interest price and future cash flows including interest. मैचिंग करना. दोनों में आंसर में डिफरेंस थोड़ा बहुत आता है. So lot of factors are there which can cause a change in YTM. Interest rate expectation change हो सकते हैं, market sentiment change होता है, economic environment change होता है, credit rating change होता है. YTM और bond price are inversely related. YTM goes up, price comes down, and vice versa. अब कोई भी बॉन्ड अगर आप देखोगे, उसका YTM और कूपन रेट आप कंपेयर कर सकते हो. इफ YTM is less than the coupon rate, that means expected rate, YTM is assumed to be expected rate, is lesser than the coupon rate, bond should trade above what? Face value. That is called as a premium. If YTM is greater than the coupon rate, bond should trade below face value. That is called as a discount. And if YTM and coupon rate are same, bond will trade at a face value. ये फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड के लिए कमेंट है. नीचे देखो सेकंड पॉइंट, वेरिएबल रेट बॉन्ड विल नॉर्मली ट्रेड क्लोज टू द फेस वैल्यू. लॉजिक, कूपन्स ऑल्सो चेंज विद द चेंज इन एक्सपेक्टेशंस. तो ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है, वो टाइम जैसे कम कम होते जाता है, वैसे प्रीमियम और डिस्काउंट का अमाउंट भी कम होता है. अगर आपने एक्स एक्सिस देखा है तो वो उल्टा है, 0 to 30 नहीं है, 30 to 0 एक्स एक्सिस. सो एज टाइम टू मैच्योरिटी कम्स डाउन, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑल्सो कम्स डाउन इवन इफ YTM रिमेन्स सेम. कूपन रेट एंड YTM ऑफ टू बॉन्ड्स, जिस बॉन्ड का कूपन रेट ज्यादा होगा वो बॉन्ड पहले पैसा देगा, रिकवरी पैसे की जल्दी होगी, ड्यूरेशन उसका कम होगा. तो इसलिए उस बॉन्ड का YTM कंपैरेटिवली कम होना चाहिए. बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, स्लाइट डिफरेंस आएगा. सो हायर द कूपन, लोअर द YTM, ceteris paribus, assuming all other things to be same. तो सर मैंने एग्जांपल दिया है. तो Bond A is a ZCB with a maturity of 5 years. Bond B is a 8% coupon bond. ये सब एक ही कंपनी ने इशू किए हैं, उसका भी मैच्योरिटी 5 years है. YTM of bond A will be higher as Macaulay duration of bond A is higher than the bond B. Bond A ZCB था, bond B भी coupon bond है. दोनों का टाइम टू मैच्योरिटी 5 years है, लेकिन YTM कौन से बॉन्ड का ज्यादा होगा? बॉन्ड ए का YTM ज्यादा होगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है. तो वो जो स्लाइड है उसके लिए मैं एक डेटा लिया है, यहां पर डेटा गिवन एंड रिक्वायर्ड. तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू इट व्हेनेवर यू हैव टाइम. सो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया, वो लाइन जो मैंने बोला उसको प्रूव करके दिखाया मैंने. तो अगर देखना ही है एग्जांपल, तो देखो डेटा जो दिया है, YTM ऑन ZCB 8% दिया है मैंने. एक्सपेक्टेड YTM ऑन 2 year ZCB इज गिवन टू बी 10%. क्यों रे?
जैसे टाइम टू मैच्योरिटी बढ़ता है या ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए। फेस वैल्यू 1000 है, दोनों बॉन्ड का मैंने वैल्यूएशन किया है। दो बॉन्ड है, बॉन्ड ए 5% कूपन बॉन्ड है, बॉन्ड बी 12% कूपन बॉन्ड है। दोनों बॉन्ड का टाइम 2 इयर्स के बॉन्ड है, बोथ द बॉन्ड्स आर 2 ईयर बॉन्ड। बट ये जो YTM दिया है जेडसीबी का 8% और 10%, ये 8 और 10 को हम बोलते हैं स्पॉट रेट। 8% जो है वो स्पॉट रेट है 1 ईयर का, 10% इज अ स्पॉट रेट ऑफ 2 ईयर। लॉजिक क्या है, फंडा देखो फर्स्ट लाइन पे, बिकॉज वी हैव फंडा एकेडमी। ईच कूपन बॉन्ड कैन बी व्यूड एज अ पोर्टफोलियो ऑफ 2 ईयर और 2 0 कूपन बॉन्ड। इट्स chop approach. 2 year bond can be chopped into 2 bonds. तो देखो मैंने क्या किया, ए का प्राइस निकालने के लिए फर्स्ट ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट 1 ईयर स्पॉट रेट, सेकंड ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट 2 ईयर स्पॉट रेट, उसका प्राइस 914 आया। फिर उस 914 प्राइस को लेके मैंने YTM डिसाइड किया, YTM आया 9.95%। फिर बॉन्ड बी का प्राइस निकाला मैंने 1036 आया, उसका YTM आया 9.89 IRR है वो, और समरी यहां पे प्रेजेंट किया। जीरो कूपन बॉन्ड का YTM 10% ही है, 2 ईयर स्पॉट रेट इटसेल्फ इज YTM फॉर अ जीरो कूपन बॉन्ड, 2 ईयर ZCB। बॉन्ड ए वाज अ 5% कूपन बॉन्ड, उसका YTM आया 9.95। बॉन्ड बी जो 12% कूपन था उसका YTM देखो कम आ गया। सो हायर द कूपन रेट lower the YTM because lower the Macaulay duration. I hope everyone understood. This principle is very important to understand term structure. तो मैंने ये कंक्लूजन आपको जो था वो बोला। टाइम टू मैच्योरिटी एंड YTM, अगर टाइम टू मैच्योरिटी बढ़ गया तो YTM ऑब्वियसली बढ़ता है क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये इसको बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर। तो ये टर्म स्ट्रक्चर मैंने यूएस का दिया था उस टाइम का, 2015 का है, कभी कभी देख सकते हो, मैंने आपको वेबसाइट बोला था। क्रेडिट रेटिंग एंड So credit rating and a YTM have inverse relationship. Better the credit rating, lower the risk, hence lower the YTM. This is a YTM is a popular yield, but there exists other concepts of yield. Nominal yield, which is a coupon rate. Current yield is current annual income by way of interest divided by current price of a bond. Yield to call calculated exactly in same manner like a YTM, but it is assuming current price and assuming that a bond will be called back बिफोर द मैच्योरिटी। कॉल डेट पे वो बॉन्ड कॉल किया जाएगा। यील्ड टू कॉल इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर कॉलेबल बॉन्ड। सिमिलरली यील्ड टू पुट इज अवेलेबल, पुट ऑप्शन इज अवेलेबल विद द इन्वेस्टर। होल्डिंग पीरियड यील्ड इज जस्ट यील्ड फॉर द एंटायर पीरियड, बाकी नहीं पढ़ा तो भी चलता है। रियलाइज YTM इज इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ये बाकी के काम के नहीं है। रियलाइज YTM इज नथिंग बट मॉडिफाइड IRR। YTM assumes that yields coupons are reinvested at a YTM, but if the reinvestment rate is given in the question, एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पर आया था, तो we need to work out modified IRR. There are multiple types of the bonds. उसमें से जो पॉपुलर एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए है वो है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड कॉलेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स पे बॉन्ड रिफंडिंग के क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो आगे लिखे हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स हमने बात किया था। इट्स प्राइसिंग ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज व्हाट, मैच्योरिटी वैल्यू डिस्काउंटेड एट YTM, डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू आएगा। परपेचुअल बॉन्ड ये बैंकिंग इंडस्ट्री में इशू किए जाते हैं। रिडीमेबल बॉन्ड्स नो, कॉलेबल बॉन्ड्स में रिफंडिंग का सिचुएशन आता है, वी आर डिस्कस दिस। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अज्यूम्स नो कॉल ऑप्शन, इट्स सिंपल बॉन्ड विदाउट एनी कन्वर्जन फीचर। So how do you find a straight value of bond? Straight value of bond is present value of coupons plus present value of maturity value discounted at normal yield on a bond which is non-convertible. Yield of non-convertible bond ले लो और फिर present value निकालो, उसको हम क्या बोलेंगे? Straight value of a bond. Conversion ratio is number of shares per debenture. Implied conversion price, it is like a strike price. It's a price at which you are buying equity shares. Implied conversion price is different, conversion parity price is different. तो implied conversion price क्या है? Redemption value of the bond. Bond अगर redeem किया तो मुझे 1000 रुपया मिलता है, लेकिन मुझे 1000 रुपए के जगह पे 20 शेयर्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली 1000 डिवाइडेड बाय
20, 50 rupees is basically implied conversion price. It's a strike price at which bond is converted into इक्विटी शेयर का प्राइस 50 रुपया, तुमको 50 में शेयर मिल रहा है. ऑप्शन वैल्यू आज के तारीख में अगर तुम्हारा बॉन्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड 1050 रुपए पे चल रहा है और स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 910 है, 1050 माइनस 910 140 is option value. So it's a option value difference, which is basically present value of expected equity value in the future minus redemption value. Conversion value, अगर बॉन्ड आज के आज कन्वर्ट किए तो शेयर्स की क्या वैल्यू है? कन्वर्जन वैल्यू इज अज्यूमिंग कन्वर्जन एज ऑन टुडे. कन्वर्जन पैरिटी प्राइस और मार्केट कन्वर्जन प्राइस, इसको मार्केट कन्वर्जन प्राइस भी बोलते हैं. इट अज्यूम्स कन्वर्जन एज ऑन टुडे. तो बेसिकली क्या है? करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड ले लो डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स पर डिबेंचर. आज के तारीख में इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए सो दैट यू विल बी इनडिफरेंट बिटवीन कन्वर्जन ऑप्शन एंड रिडेम्पशन ऑप्शन, अज्यूमिंग यू कैन डू कन्वर्जन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसको बेसिकली बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन. अ कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ अ American option. American option is you can convert any time. European is you can convert only on maturity or expiry. Conversion premium, अगर conversion parity price हमने कैलकुलेट किया वो आ गया 13 रुपया पर शेयर, बट अभी इक्विटी शेयर मार्केट में चल रहा है 11 रुपीज पर शेयर. So you need a jump of 2 rupees in the price of a equity share. So conversion premium is 2 rupees. You should express in percentage. So we should divide 2 rupees by current price of a share. डाउनसाइड रिस्क, बॉन्ड की करंट प्राइस चल रही है 1040 रुपीज, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 900 रुपीज. तो यू हैव डाउनसाइड ऑफ 140. तो 140 अपॉन 1040 लॉजिकली, बट आवर बिलवड इंस्टीट्यूट टेक्स डिवाइडेड बाय 900 ऑल्सो. तो गिव बोथ द आंसर्स. वी गेव बोथ द आंसर्स. 1040 is a current price of the bond minus straight value 900 divided by straight value 900, और एक आंसर लिखने का 140 divided by 1040, both the answers. YTM on a convertible bond should be logically, बोलो, lower, because convertible bond का जो प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए. You pay for a call option. तो नॉर्मल बॉन्ड जो है नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, उसका YTM अगर 9% चल रहा है, कन्वर्टिबल बॉन्ड का YTM उससे कम चलेगा, 7.5. डिफरेंस ऑफ 1.5 is called as a yield sacrifice. Floating rate bond interest rate is linked to some external benchmark determined by third party. Reissue of bonds, this is the bond refunding decision. ये कब होता है? When you have callable bonds. Number 1, I gave you example of HDFC Bank. If you have callable bonds, then you issued callable bond at a higher rate of interest, let us say 12%. Now interest rates have come down to 8%. So what you do? You issue new bond at 8% and refund the bond at 12%. So you need to consider various factors. What is the decline in the interest rate, amount of the call premium that you might have to pay to redeem the old bonds, flotation cost of the new bond, that is to be considered. Please remember, flotation cost of old bond is a sunk cost, is irrelevant. उसका टैक्स शील्ड जो है वो आज रिलेवेंट है, नॉट द अमाउंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट. ओवरलैपिंग इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा. ओवरलैपिंग इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट न्यू इंटरेस्ट रेट, नॉट ओल्ड इंटरेस्ट रेट, एंड टैक्स शील्ड यूजिंग टैक्स रेट. तो हम कंपेयर करते हैं दो ऑप्शंस को. अगर हम ओल्ड बॉन्ड के साथ कंटिन्यू किए तो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, टैक्स प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट, KD. You should calculate KD if not given in the question. Tax shield आपको मिलेगा. Find out the present value of tax shield of unamortized flotation cost of old bond and tax shield of discount on issue of debentures. Present value ढूंढो. Present value is inflow. So green color यहाँ पर जो है वो inflow है. Option 2, you go for new bonds. वहां का जो interest है उसकी present value ढूंढो. Old bonds का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है और डिस्काउंट है वो आपको पूरा का पूरा लमसम में डिडक्शन मिलेगा, तो उसका टैक्स शील्ड कंसीडर करो. ऑप्शन 2 में लमसम है, इफ यू कैन ऑब्जर्व. ऑप्शन 1 में वो ओवर द टेन्योर था.
फिर नए बॉन्ड्स का जो कॉल प्रीमियम है, नए बॉन्ड्स जब इशू करोगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा ओल्ड बॉन्ड्स का. कंसिडर कॉल प्रीमियम, कंसिडर फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, consider tax shield of flotation cost. Flotation cost of new bonds is incurred today, but tax shield is available over the tenure. Overlapping interest consider karo after payment of tax. Discount rate should be cost of debt. If the balance maturity of old bond and the total maturity of new bond is not same, calculate annualized present value. Annualized present value is equal to present value divided by present value annuity factor. तो बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजंस आप लेना. मालकाइल की थियरम थे, बॉन्ड प्राइसेस मूव इनवर्सली विथ इंटरेस्ट रेट्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव मोर रिस्क, द प्राइस सेंसिटिविटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, बॉन्ड्स विथ लोअर कूपन आर मोर सेंसिटिव टू द प्राइस चेंजेस. सो क्योंकि वहां पर फ्लक्चुएशन, देयर इज मकाउले ड्यूरेशन इज मोर फॉर अ लोअर कूपन बॉन्ड, एंड देयर इज asymmetrical volatility. Capital gain from decrease in YTM is more than the capital loss by increase in YTM. Term structure of interest rate, which is basically plotting time to maturity on x-axis and yield on y-axis. Conceptually, while drawing the term structure, you should consider spot interest rates. Spot interest rates are calculated assuming no coupon payments in between, but rarely you get spot rates. So practice में time to maturity is on x-axis and YTMs are on y-axis rather than the spot rate. There is technically a difference between YTM and spot rate for a coupon paying bond. For a ZCB, YTM and the spot rate is same. So normal yield curve is increasing in slope. Flat yield curve is flat. It indicates no preference to the maturity. Inverted yield curve indicates some trouble with the market. So credit spread is difference between the yield on corporate bond and yield on GSEC. Logically, yield on corporate bond should be higher. Poorer the credit rating, higher the credit spread. So interest rate जब determine होते हैं तो तीन चीजें मैटर करती है. नंबर वन, लोन या जो बोरिंग है वो कब हो रहा है, लोन कब एंड हो रहा है. वी कॉल इट द शॉर्ट लेग एंड एंड लेग, एंड डेट ऑन विच यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. फ्रॉम दिस वी गेट अ concept of spot rate. Spot rate is a rate decided today for a borrowing to be done today. When I say spot rate for 3 years, it is 0/3 FRA. So it is a borrowing done today for a period of 3 years, assuming no coupon payments in between. That's why spot rate and YTM differ. So spot rate and YTM do differ. Forward rate is a rate agreed today for a borrowing to be done in future. This gives us concept of FRA. So if I talk about a 2/4 FRA, it is a loan to be taken after 2 years for a period of 2 years, rate decided today. The gap between the long leg and the short leg is a time period of loan. Forward rates are determined from spot rate only. You can go from spot rate to forward rate using this formula on your screen. FN, forward rate for nth year, is equal to 1 plus Rn. So if I want to find a forward rate for 4th year, F4 is equal to 1 plus S4 raised to 4. S4 is a spot rate for the 4-year tenure, raised to 4, divided by 1 plus S3 raised to 3 minus 1. This was F4. F4 basically means 3/4 FRA. But examiner might be clever. He may ask you 3/7 FRA. If he asks you 3/7 FRA, we say F 3/7. That is a forward rate for 4-year tenure, loan to be taken after 3 years for 4 years. So F 3/7 will be equal to 1 plus F7 raised to, S7. 1 plus S7 raised to 7 divided by 1 plus S3 raised to 3 whole bracket raised to 1/4. That is a 4th root of this thing, minus 1 raised to 1/, long leg minus short leg, if you remember. So I repeat, F 4/9 alag le raha hu. F 4/9 will be equal to 1 plus S9 raised to 9 divided by 1 plus
S4 raised to 4, whole thing raised to 1 by 5 minus 1. Keep in mind, if you forget this formula, it's absolutely okay. Arbitrage का concept लगाना है. Assume 100 rupees is invested today for 9 years. What will be the maturity value? Assume 100 rupees invested today for 5 years. What will be the maturity value? 5 years maturity value, whatever you get, and 9 years maturity value, whatever you get, उन दोनों के बीच में compound rate ढूंढना. I taught you jumping. Forward rate के comments दिए. So ZCB, pricing remarks for coupon bond. A coupon bond can, इसका price ढूंढने के 3 तरीके हैं. You can discount all cash flows at YTM. You can discount all cash flows at spot rate, or you can discount all cash flows at forward rate. Spot rate के लिए yearly cash flows को discounting करना है. So you can discount yearly cash flows at spot rate, or you can discount yearly cash flows at a forward rate. How do you go to forward rate from spot rate? I told you. Forward rate to spot rate, if you want to calculate, spot rate is geometric mean of forward rates. So if you want to find S4, it will be 1 plus F1 into 1 plus F2 into 1 plus F3 into 1 plus F4 raised to 1 by 4 minus 1. So pricing remarks for coupon bonds, we can find out, you know, spot rates. Using spot rate, we can find a current price of a bond, and then we can find out YTM. Duration of a bond is such a time period where you can recover your entire investment along with the desired rate of return. Duration calculate करने के लिए DCF table use करो, year, cash flow, discounting factor, and then present value, and one more column, present value multiplied by time. Total of present value multiplied by time divided by current price is a duration. Half yearly bond है तो duration half year में आएगा, उसको multiplied by, divide by 2 करो to get a yearly duration. Multiple factors affect duration. If you have portfolio of bond, duration of a portfolio is a weighted average of individual bonds duration. This helps us in doing immunization problems. Modified duration is Macaulay duration divided by 1 plus YTM, annual YTM, divided by number of times interest is paid in 1 year. You can use modified duration to find out percentage change in the price of a bond. So percentage change in the price of bond is minus modified duration, which is also known as D star, into delta YTM, right? If the YTM changes by 3.5%, delta YTM will be 3.5. In this case, convexity. To calculate a convexity, do not remember the formula. You just remember year, cash flow, discounting factor, present value into T you need for calculating duration. You should do one more column, present value into T plus 1. उस कॉलम का टोटल जो आएगा वो ये पार्ट रहता है. दिस पार्ट इज अ टोटल ऑफ दैट कॉलम इनटू 1 अपॉन, so convexity is equal to 1 upon bond price multiplied by 1 upon 1 plus YTM square. I have written this in combined form. Into that number, total of summation of, ये जो है ना, this one is summation of present value into T plus 1. This is the way you can calculate a convexity. Once you get a convexity number, percentage change in the price of the bond is minus modified duration into delta YTM. This is same as modified duration plus half of convexity into delta YTM square into 100. I missed here into 100. You delta YTM in this case, if YTM changes by let's say 1.5%, here you should not take 1.5. Here delta YTM should be 1.5 upon 100 क्योंकि into 100 करते हो आप. So 1.5 will be 0.015 square into 100 आपको करना है. But as per ICAI also did the same thing. Convexity का उन्होंने calculation अलग किया था. So as per ICAI module, C star is convexity into delta YTM square, this one, into 100. What is C star? C star, they are calculating half of convexity, they are calculating here. So ICAI calculates convexity little differently. We did one question also on this, if you remember. ICAI calculates C star. C star is nothing but half of convexity. Half of convexity is V plus V minus 2V0 upon 2V0 into delta Y square. तो ये क्या है?
You need to, V0 is a initial price of the bond at a given YTM. Then they will give you, if YTM goes up by 2%, if YTM goes down by 2%, let's say they give you existing YTM as 10, then you have to take a price of the bond at 10%, then you have to find a price of the bond at 12%, then you have to find a price of the bond at 8%. So formula क्या आएगा? V plus, that is the price of the bond at 12%, plus V minus, that is the price of the bond at 8%, into 2 times of the price at 10% YTM, divided by 2 times of the price at 10% YTM, into delta Y square, or delta Y, change in YTM square, and then you would get it. This is, ICI module is complicated. It's okay to forget the ICI module formula in the exam. If you forget, it's absolutely normal to present a YTM as per what we have discussed. Difference is just the approximation difference. It is not a concept difference. So I just presented ICI formula. If you can remember, or you can write it somewhere, you remember. Bond immunization, you try to protect yourself from fluctuations in the price risk and reinvestment rate risk. There are a lot of risks associated with the bonds. That's it. I talked about 30 minutes. We did it in 31 minutes and 1 second. Bye-bye.